नमस्कार दोस्तों। अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हैं तो आज मैं आपको ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पे लोग रॉयल एनफील्ड खाते हैं, रॉयल एनफील्ड पीते हैं एंड रॉयल एनफील्ड सोते हैं। Eat Royal Enfield, drink Royal Enfield, and sleep Royal Enfield. Let us go to the world of the Royal Enfield. Yeah! आप लोगों को जैसे पता है कि सुपर मीटियोर्स 650 का लॉन्च लास्ट ईयर 2022 में गोवा में हुआ था। ये इट वाज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लॉन्च हुआ था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द पीपल, सारे दुनिया से लोग यहाँ पे आए थे। दोज हु आर द रॉयल एनफील्ड लवर्स, रॉयल एनफील्ड लवर्स सभी लोग सभी जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आए थे और दे हैव गैदर्ड टुगेदर। यू वोंट बिलीव दिस रॉयल एनफील्ड ऑलमोस्ट 10,000 people around the world, around the globe, they came to the Goa for this event. It was a very good event and it was very successful. And I was one of the luckiest guy who attended this event. मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये इवेंट अटेंड किया था एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड अगर आप रॉयल एनफील्ड के लवर हैं तो आपको हर कुछ रॉयल एनफील्ड के बारे में मिलेगा। आप सुबह शाम रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड, आप रॉयल एनफील्ड देखेंगे, रॉयल एनफील्ड खाएंगे, रॉयल एनफील्ड जिएंगे। The world of the Royal Enfield, the first I have seen the world of the Royal Enfield. रॉयल एनफील्ड खाते हैं, रॉयल एनफील्ड सोते हैं, रॉयल एनफील्ड जीते हैं। द वर्ल्ड ऑफ रॉयल एनफील्ड, लोग यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ही जीते हैं। तो ऐसे ये दुनिया थी जहाँ पे मैं भी शरीक हुआ था, मैं भी शामिल हुआ था इस बिगेस्ट इवेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड में। और आई हैव सीन अ लॉट, मैंने बहुत कुछ देखा यहाँ पे एंड वही एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। एंड रॉयल एनफील्ड यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स इन्होंने अरेंज किए थे। रॉयल एनफील्ड ऑर्गेनाइजिंग टीम वाज वेरी गुड एंड देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दे हैव अरेंज। यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने डर्ट ट्रैक एंड रेसिंग अरेंज किया था और एक जगह पे इन्होंने दे वर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल एनफील्ड। देयर वाज अ स्टॉल ऑफ द रॉयल एनफील्ड सिनेमा। रॉयल एनफील्ड सिनेमा के बारे में बातें हो रही थी कि हाउ इट वाज इन्वेंटेड, द हिस्ट्री ऑफ रॉयल एनफील्ड, कैसे ये रॉयल एनफील्ड हुआ। इफ यू आर रॉयल एनफील्ड लवर्स एंड यू वांट टू नो हाउ रॉयल एनफील्ड इन्वेंटेड एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल एनफील्ड, तो वो भी आपको मिल जाता था। एंड उन्होंने एक सिनेमेटोग्राफी गैलरी बनाया था जहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के सारे वीडियोस, हिस्ट्री के बारे में आपको दिखाया जा रहा था। इंटरव्यूज हो रहे थे एंड देयर वाज अ रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप आल्सो देयर। वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप लगे हुए थे। यहाँ पे किसी ने वर्कशॉप रॉयल एनफील्ड के इंजन से वॉच बनाया था एंड किसी ने रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई किया हुआ था। एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप। अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई भी अगर इश्यूज हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो, यू कुड हैव gone to any workshop or you could have asked anything to the Royal Enfield lovers. So Royal Enfield वर्कशॉप में पूछ सकते थे। तो ये एक ऐसा जगह था एंड एक जगह पे रॉयल एनफील्ड के मॉडिफाइड व्हीकल्स, लोगों ने रॉयल एनफील्ड के व्हीकल को मॉडिफाई किया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ रॉयल एनफील्ड मॉडिफाइड व्हीकल्स वहाँ पे लोगों ने डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। एंड देयर वाज शॉप्स फॉर द रॉयल एनफील्ड लवर्स। अगर आप बाइक राइड करना चाहते हैं, रॉयल एनफील्ड राइड करते हैं, तो आपके बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स लगे हुए थे। यू कैन परचेस रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स, यू कैन परचेस रॉयल एनफील्ड के एनीथिंग एनीथिंग यू कैन परचेस आपको चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ सुपर मीटियोर्स लॉन्च, सुपर मीटियोर्स लॉन्च। और ये सुपर मीटियोर्स लॉन्च में आपको सुपर मीटियोर्स डिस्प्ले किया हुआ था वेयर यू कैन बुक रॉयल एनफील्ड। आप बुक कर सकते हैं वहाँ पे। ऑल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रॉयल एनफील्ड डिस्प्ले किए हुए थे।
There was a black, white, and there were a lot of combination of the Royal Enfield. तो हमारा जो रॉयल एनफील्ड था वो यहाँ पे ही बुक हुआ था. 7 a.m. biryani booked the Royal Enfield here in Rider Mania, and we got delivered. So it was a very good experience for me, and वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. And there was many categories. There was dirt track एक साइड में हो रहा था, and lot of things were there. मैंने तो रॉयल एनफील्ड का लाइफ जिया, रॉयल एनफील्ड का लाइफ जिया, रॉयल एनफील्ड का लाइफ जिया. It was a really good experience, and those experience I am going to share you right now. और हाँ, और एक बात मैं ये बता दूं, एंड मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग दोनों बैंगलोर से राइड करके, रॉयल एनफील्ड राइड करके हम लोग गोवा गए थे. एंड we stayed there for 3 days, and we enjoyed a lot. We enjoyed a lot. We lived Royal Enfield life over there, and I am waiting for the this year the Royal Enfield event. मैं इस साल का wait कर रहा हूँ. I'm waiting, and this year also I will participate. So all the best, and let us watch this Royal Enfield event, Raider Mania 2022. Yeah. और हम जैसे ही day 1 को रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचे, so we have seen lot of huge crowd over there. और इस huge crowd को देख के हम समझ गए कि it's going to be amazing, really great over there. Yeah. Alright, let's go on the track. Get ready for the race. This is Rider Meteor. Welcome to the Motorverse. We're going to see the race any moment now. This is what it's all about. We're going to start your practice right now. It is the expert category on the 350cc. Number 26. Number 38. Number 21. Number 16. 19. Number 3. The first batch of qualifiers going around the track for their practice run. In the lead, grabbing the whole shot. Come on guys, give a cherry for that! Number 1, leading in the track. Grabbing the whole shot. Come on guys, give a cherry for that! Number 1, leading in the track. Really living up to his actual number. Staying in the lead. Making his way through the sweep now. Through the long sweep all the way to the last corner. Completing his first lap. Here he is. Number 1. That's right, we're going to take a start. Here we go. While we run up the track, we're going to throw some water on the track to get some cool reaction on the side. Let's see what's going to happen up there. Yeah, on the track.
coming to the voices then. So do check them out, join them. Build some muscles, bro. That's it, you just dig down, you go nowhere. It's so hard to read it.